Reverend Bishop Thomas D'Souza is on his way and shall soon arrive in the hall. I request all you to welcome him with a big round of applause. Right side entry. Welcome our beloved His Lordship, Right Reverend Bishop Thomas D'Souza, Administrator Father Dr. Anil Pereira, with his kind and scintillating smile, Father Rajesh Lopez, and our ever inspiring Principal Professor Dr. Somnath Vibhuti. Please be seated. Welcome, Your Lordship. I request the dignitaries to be seated on the dais. Good morning to the dignitaries on the dais, esteemed faculty members from this college, as well as from the colleges that share the same educational ecosystem with us. Dear students and the audience, it gives us, the Garcian family, immense pleasure to welcome you all to today's program titled Many Altars, One Motherland, Voices of Sacrifice Across Beliefs. Let us start with welcoming His Lordship. I request Principal Dr. Somnath Vibhuti to welcome His Lordship Bishop Thomas D'Souza with a bouquet. Love of flow. This initiative invites us to reflect upon an important truth about India's freedom struggle. Our independence was not achieved by any one community, region, or ideology. It was the result of the collective courage and sacrifice of individuals from diverse religious backgrounds who stood united for the motherland. While we often remember celebrated leaders, many unsung heroes made contributions that remain less well known. They came from Hindu, Muslim, Sikh, Christian, and Buddhist communities. They prayed differently, lived differently, and spoke different languages, yet they were united by a shared dream of freedom. Their dedication reminds us that the spirit of nationalism during the freedom movement was rooted in unity, justice, and moral conviction. The kind of nationalism India as a country has practiced and continues to practice has always been different from what Western countries have conceived of as nationalism. For the
West nationalism was monolingual, monocultural, and monoreligious. For us, on the other hand, it has always been unity in diversity. A recent publication, Ganarajya ka Swadharma, published in January 2026 and roughly translating as The Essential Nature or Duty of the Republic by Yogendra Yadav, reiterates that nationalism in India has never been xenophobic but has been a positive and inclusive idea. Today's program provides us and our students with a platform to share their understanding and reflections on these freedom fighters who did not always receive widespread recognition but whose sacrifices were equally significant. Through their presentations, we hope to rediscover stories of courage, resilience, and interfaith solidarity that shape the India we live in today. As we begin, let us remember that many altars stood united for one motherland. May this program inspire us to carry forward the same spirit of harmony, equality, and responsibility, and responsible citizenship in our own lives. I request Principal Professor Dr. Somnath Vibhute to share his thoughts on this event program, the idea that was conceptualized by him, by Father Dr. Anil, by Father Rajesh Lopez, and various other important people. Sir. Thank you, Dr. Anil. Respected Chairman, His Lordship Bishop Thomas, our Administrator, beloved Father Dr. Anil, Father Rajesh, dear colleagues, participating students from this college and other colleges, a very warm welcome and good morning to all of you. Indeed, it is a very important attempt from our side to have such kind of elocution series in the college. Recently, we have celebrated 78th year of India's independence. And in this background, the idea came in mind, why not we try something where the unknown heroes of India's freedom struggle be researched, information regarding them can be gathered, analyzed, and put forth in front of Zen's head. Because the world is digitizing fast and youth are on the platform of digitization, generative information provided by Wikipedia, by Google, by Copilot or Gemini may mention household names of freedom fighting like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Subhash Chandra Bose. However, there were hundreds and hundreds and thousands of others who have contributed in their own capacity. Approximately a month ago, Father Rajesh mentioned this idea, this thought, can we do something in this regard? Ours being a minority college, we believe in inclusivity, we believe in taking people together, hand in hand, shoulder to shoulder, and live up to true spirit of vividhata, that is diversity in this country. Why not try something where unsung heroes having different beliefs fought for one common mission, that is Swatantriya, or that is called as independence. And this gave us an impetus. Editorial board was formed. Father Anil guided us, and then work started taking shape. Some students were chosen for this task, and they were shown resources in the library under the guidance of Dr. Chaitanya Veer, Dr. Anil Sonavane, Dr. Ramdas Tonde, and Dr. Dinesh Kale. They reviewed the manuscript written by students, edited it, and then the idea is evolved
that we can have not just booklet on those unsung heroes of India's freedom movement. We should give exposure to those authors who are orators, good orators, and then we decided to have this program in this college, where idea came that why not we invite students and young minds from neighboring colleges in our cluster. Our college, being the cluster 38 of the University of Mumbai, is a guiding college for 9 colleges in the vicinity. And then we invited students and staff members from neighboring colleges. I'm very happy. Students from Josepa High School, students from Thomas Baptista College, students from New English School, students from Anna Sai Vortak College, they have remained present for this occasion. It's a very important lecture series, or elocution series rather, and I thank management for wholehearted support for this. I thank editors, I thank administrator, I thank young students who wrote essays on them, and they are going to present today. So once again, hearty welcome to all of you. I'm very happy that such kind of event is happening here. It is live streamed on the YouTube account of the college, and this can become a model for other colleges in the vicinity, so that true inclusivity, all people from different faith coming together, living under one roof and fighting for and working for relentlessly the Vikasit Bharat, motherland of our own, and that is the purpose. So thank you very much once again. This is the brief forward from my side, and I request Dr. Anil to carry forward with the program. Thank you, sir. I request our administrator, Father Dr. Anil Pereira, who is instrumental in getting this booklet materialized, to share his views. Respected Bishop Thomas D'Souza, Principal Sir, the staff and the students, as we have gathered here to publish this booklet and for the eloquence of the students which we are going to have here, sometimes we tend to forget the history, and that's why these heroes are called unsung heroes. We sometimes try to remember them and sometimes we forget them. History stands as a witness what India has undergone and how we have achieved the freedom of India. There were so many people who fought for the freedom, and these fighters were from all the religious backgrounds. And when we celebrate like this event, we have to always remember that we are one nation, we have unity in diversity, and we live in coexistence with one another. And we must always remember this, no matter which religion we belong. I am an Indian, and I have a responsibility towards my country, and I have to show that responsibility in participating in the growth of India. We have to always remember the words of Swami Vivekananda: we are no more ladies and gentlemen, but we are all brothers and sisters, because we are the children of one God. We believe in one God, and this God is inviting us to work for our country relentlessly. Wherever we are, we have to contribute towards the growth of our nation. So as we have gathered here for this event, let us remember all these heroes which we have already mentioned in the booklet which we are going to publish shortly. But always try to remember that we belong to this country, we love our India, and we take a pledge to work towards the growth of India. Thank you. Thank you, Father. Now I would like to request His Lordship to address the audience, but before that, shall we release the booklet?
many altars, one motherland. I declare that this publication of St. Gonzalo Garcia Senior College of Arts and Commerce is released. Respected Dr. Father Anil, Father Rajesh, our principal Dr. Vibhuti sir, all respected and esteemed staff members of St. Gonzalo Garcia Senior College, the guests from other colleges, and my dear young students and friends. It gives me immense joy whenever I come to an education institution, because I always believed and I grew in an atmosphere where my education institution taught me that any education institution is a miniature India. I still remember my school days when at one side was my friend Mahesh Kubdikar, on the other side was Sushil Dias, and in the next row was Amin Khan. And during the breaks, all of us would gather, four of us, and sit together and share our tiffins. We used to go out on the grounds and play. And one day Mahesh will say, today is my feast. One day Amin will say, my feast. And one day Sushil and I will say, our feast. And we share the joy and we grieve in this healthy atmosphere in our school, and till date, 40 years have passed. Mahesh sends me a good morning, sir, and Amin sends me, hi, Thomas. My dear friends, then I went to college in Vartak College, where also I experienced the same spirit, wherein we were in a cricket team and I was supposed to be the captain of under 19. And there also I had in my team different players who would come together and say, we have to work together, we have to play together, we have to give our full energy so that our college and our team becomes a leading team. And with that same spirit, I grew. And today, when I look at myself as a priest and now a bishop, one sentence that inspires me from our holy scripture is, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Yes, my dear young friends and brothers and sisters, I believe and I agree with this atmosphere of spiritual oneness, that we are all brothers and sisters, and we need to foster this relationship in a much wider and deeper manner. This small venture of our college, many altars, one motherland, I am sure will enhance the spirit of spiritual oneness, wherein we will be enriched and enkindled, encouraged to work together
for a great nation. And therefore, when I stand before you, I am reminded that the future of the nation is not ahead of us. Yes, my dear friends, the future of the nation is not ahead of us. The future of nation is here with us, within us. We are the future and present of our nation. I am also reminded of what our President of US once said, John F. Kennedy. Do not ask your country what the country can do for you, but ask what you can do for your country. My dear young students, these are not just powerful words. This question echoes in every heart that we are contributors, not mere critics. We are builders, not bystanders. We are participants, not spectators. This small venture of ours, where we are going to hear the stories and the inspiring lives of our nation hero, Mother India, definitely they will create in us a spirit of nation building. My dear young students, nation building, these two words are not just ordinary words. They are dreams of generation. They are dreams of sacrifices of heroes. They are responsibilities of you and me, each and every citizen of our country. And therefore, do not see this venture as a mere academic expression. It is the heartbeat of our institution. It is the breath of every citizen, the foundation of every progressive society. When I think of India, when I think of nation, it is not just a geographical boundary on a map. It is not just an emotion. It is not just an idea. I believe it is the living spirit that shapes the values, visions, and actions of every person. These words remind us that nation building is not a distant dream. It is our daily duty. Nation building is a continuous process. Dear friends, nation building is the shaping of character, the strengthening of values, and the collective pursuit of justice, peace, equality, and morality. As we stand before this period or era of our generation, we all are reminded that a nation that strives only when citizens actively participate in its growth will experience a democracy with living responsibility. And therefore, my dear students, our institution of St. Gonsalo Garcia urges and looks forward for character building, because character building is an important venture in nation building. Our Prime Minister Jawaharlal Nehru said, citizens consist in the service of the country, and true citizenship is not just only rights alone, but it is also responsibilities. That is respecting others, protecting public property,
following laws, and standing against injustice. It means an ethical and corrupt free society. We all have to strive to build such a nation. This is our social responsibility wherein we strive for equality and justice. As we look forward for these great speeches, I congratulate each and every student who have taken efforts, who have slogged, who have given time, and who have reflected and meditated on these silent heroes. I believe that these efforts of the students will not be a venture in the air like a balloon to burst, but it will be an inspiration for themselves and their friends around them, like you and me who today are present, and all those who will watch this YouTube channel. May it inspire many more so that through our little things we will build up a nation of the dreams of our people who gave their lives for this nation. As we speak of nation building, we believe that it is a continuous journey and it requires resilience, integrity, and unity. Let us strive together to build this one nation. Let us commit ourselves that this venture will not just be in this classroom, but will move into society where it will be seen through service, through transparency of behavior, and hearts of empathy. My dear students, for the future of the nation is not written by chance. It is written by character, courage, and commitment of citizens. Let us be one who will build up character, courage, and commitment. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bharat. Thank you, Your Lordship, for your message. Unity in diversity is important, and to imagine any kind of equality, first we also need to understand inequality. Now I request all the dignitaries to be seated, and we start with the speeches of the students. Ashubha Lakshmi. What if I told you that India's freedom fighter did not carry a weapon, did not lead a protest march, yet fought the British Empire with nothing, but with his voice, his pen, and his unshakable belief in India? That man was Frank Antony. Good morning, respected dignitaries, teachers, and my dear friends. History often speaks the loudest voices, but is sustained by those who speak with courage, clarity, and conviction. Today, I speak about Frank Antony, a towering leader of the Anglo-Indian Christian community and a committed contributor to India's freedom struggle. At time when when India was claimed by colonial rule, many assumed that the Anglo-Indian community stood on sidelines. Frank Antony shattered this myth. He boldly declared that loyalty to the nation must always come before loyalty to power. Frank Antony once said, "We are Indians first, last, and always." These were not just words, they were promise he lived by.
Born in 1908 and trained as a lawyer, Frank Antony used the law not to serve the British Empire but to challenge it. He opposed racial discrimination, fought unjust colonial policies, and stood shoulder to shoulder with national leaders demanding complete independence for India. While some chose the path of violence and others mass protest, Frank Antony adopted a different yet equally powerful method: constitutional resistance. He believed that freedom must be won not only on streets but also in the minds of people and within the framework of justice. He openly supported Indian National Congress and made it clear that Anglo-Indian Christian communities' future lay in free and united India. At a time of deep communal divisions, this was an act of remarkable courage. As independence approached, fear and uncertainty gripped minority communities. But Frank Antony refused to give it to fear. Instead, he engaged with India's leadership to ensure that freedom would protect everyone, not just the majority. His effort bore fruit in India's independent constitution, which included safeguards for minority rights. He later served in both Lok Sabha and the Rajya Sabha, proving that freedom fighters do not retire after independence, they rebuild the nation. Perhaps his most lasting contribution was in the field of education. Frank Antony believed that political freedom without education was incomplete. He famously said, "The destiny of a nation is shaped in its classrooms." With this vision, he helped establish the Council for the Indian School Certificate Examinations, empowering generations of Indians with quality, inclusive education. Frank Antony stood for something deeply persuasive and relevant even today: that patriotism is not about religion, race, language, but about commitment to nation's future. So the next time when we speak about India's freedom fighters, let us ask ourselves, do we only remember those who fought with swords and slogans, or also those who fought with ideas and integrity? Frank Antony fought with both and won India something priceless: unity with freedom. He was an Anglo Indian Christian by identity, but an Indian nationalist by spirit. Thank you. Thank you, Subulakshmi. Ashwita Meher. नमस्कार आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षक गण और मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप सभी के सामने भारत के महान सेनानी करतार सिंह के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। करतार सिंह करतार सिंह सराबा का जन्म 24 मई 1859 को पंजाब में हुआ था। बचपन से ही वह साहसी और देशभक्त थे। आज मैं आप सभी के सामने भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। करतार सिंह सराबा का जन्म 24 मई 1859 को पंजाब में हुआ था। बचपन से ही वह साहसी और देशभक्त थे। जब वे बड़े हुए तो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि भारत अंग्रेजों की गुलामी में है। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। करतार सिंह सराबा गद्दार पार्टी के सदस्य थे। गद्दार पार्टी का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना था। उन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। वे बहुत कम उम्र में महान क्रांतिकारी बन गए थे।
करतार सिंह सराभा ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन यह योजना अंग्रेज़ों को पता चल गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उनसे अदालत में पूछा गया कि क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा है, तो उन्होंने गर्व से कहा कि उन्हें अपने देश के लिए काम करने पर कोई पछतावा नहीं है। 16 नवंबर 1915 को जब वे फांसी पर जा रहे थे, तब वे देशभक्ति गीत गा रहे थे। सेवा देश दी जिंद दिए बड़ी औखी, जिन्ना देश सेवा बीच पैर पाया, उन्ना लाख मुसीबता झालिया ने। देश की सेवा करना बहुत कठिन है, बातें करना बहुत आसान। जिन्होंने देश सेवा में कदम रखा, उन्होंने लाखों मुसीबतें सहन की। करतार सिंह सराभा का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। वे हम युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा हैं। इतनी छोटी उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना बहुत बड़ी बात है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि उम्र बड़ी नहीं होती, जज्बा बड़े होते। धन्यवाद। श्री ज्योति। What is freedom if it exists only on paper? Dr. Babasaheb Ambedkar asked this question long before independent India was born, and he dedicated his life to answering it with justice, equality, and dignity. Myself, Sri Jyoti Srinivasan from TY BCom. Honorable guests, respected teachers, and my dear friends. India's freedom struggle was not about ending British rule. It was about ending centuries of social injustice. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, fondly remembered as Baba Sahib, fought a battle far deeper, a battle to ensure that freedom reaches the last and the weakest. Born in 1891 into the society that denied him basic human dignity, Ambedkar experienced discrimination from his young age. But instead of surrendering to oppression, he turned education into his weapon. He became one of the most learned Indians of his time, earning degrees from the institutions like Columbia University and the London School of Economics. Dr. Ambedkar firmly believed educate, agitate, organize. This was not just a slogan, it was a strategy for liberation. During the freedom movement, Ambedkar fought fearlessly for the rights of depressed classes, ensuring that political independence would not replace British rule with social tyranny. He fought for equality, access of public resources, and representation for the marginalized. Though he differed with some leaders on methods, his commitments to the nation was unwavering. He reminds India with a powerful warning. Political democracy could not last unless there lies at the base of social democracy. After independence, Dr. Ambedkar's greatest contribution came as the chairman of drafting committee of the Indian Constitution. He shaped a constitution that guaranteed fundamental rights, equality before law, and protection against discrimination, making it one of the most progressive documents in the world. He believed that true freedoms meant liberty of thoughts, equality of opportunity, and fraternity amongst the citizens. Even in his final years, Dr. Ambedkar continued to fight injustice, choosing the path of Buddhism as a moral rejection of caste oppression. His life was a message of resistance through reasons and reform. So, today, as we gather here, let us ask ourselves, are we merely enjoying freedom or are we practicing equality? Dr. Babasaheb Ambedkar reminds us that freedom without justice is an illusion, and his message echoes even today. Equality may be written in law, but it must live in our hearts. Thank you. Manisha.
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, पूज्य गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मनीषा यादव, मैं तृतीय वर्ष कला की छात्रा हूँ। आज मैं भारत के महान समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अत्यंत विश्वासपात्र सहयोगी दादा साहेब गायकवाड़ के जीवन और उनके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अमूल्य योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। भारतीय स्वतंत्रता के बाद के दलित आंदोलन के एक अग्रणी नेता के रूप में दादा साहेब गायकवाड़ का नाम अमर है। उनका पूरा नाम भाऊराव कृष्णाजी गायकवाड़ था, लेकिन वे दादा साहेब गायकवाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराष्ट्र के कोने कोने में उन्हें कर्मवीर की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने भी 1968 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देकर उनकी समाज सेवा का सम्मान किया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1902 महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक महार परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें जातिवाद का कठोर दंश झेलना पड़ा। स्कूल के रजिस्टर में उनका नाम भावड़ा किशन महार लिखा जाता था। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे नासिक के अंग्रेजी स्कूल में दाखिल हुए। सन 1920 में राजश्री छत्रपति शाहूजी महाराज द्वारा नासिक में स्थापित छात्रावास में अधीक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। यह नौकरी उन्हें रास आई। वहां बैठकर वे पुस्तकें पढ़ा करते थे। सन 1926 में डॉक्टर अंबेडकर कोर्ट के किसी काम से नासिक आए और यहीं पर भाऊराव की पहली मुलाकात डॉक्टर अंबेडकर से हुई और वे उनसे मिलकर प्रभावित हुए। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं अक्सर कहा करते थे कि मेरी आत्मकथा का आधा हिस्सा भाऊराव अंबेडकर का होगा। उन्होंने 2 बार अंबेडकर के प्राण बचाए थे। दादा साहेब गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों में हिस्सा लिया। 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब सत्याग्रह में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक कुओं से पानी पनघट आंदोलन भी चलाया और अनेक सत्याग्रह किए। अगस्त 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसके दादा साहेब संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नागपुर में हुए दलितों के अखिल भारतीय सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जिसके भी दादा साहेब संस्थापक सदस्य थे। 3 अक्टूबर 1957 को नागपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और वे इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1964 से 1971 तक रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रहे। दादा साहेब गायकवाड़ का कार्य केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी था। भूमिहीन दलितों के लिए जमीन का मुद्दा उनके आंदोलन का केंद्र बिंदु था। 1959 में रिपब्लिकन पार्टी 2 गुटों में विभाजित हो गई। तब औरंगाबाद में हुई परिषद में दादा साहेब गायकवाड़ ने जमीन के स्वामित्व के मुद्दों को केंद्र में रखा। 30 जुलाई 1959 को उन्होंने महाराष्ट्र भर में भूमि सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में लगभग 50,000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। महिलाएं, बच्चे, बौद्ध, दलित, आदिवासी तथा अन्य जातियों के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन में हजारों लोगों ने जेल यात्रा की। जमीन का राष्ट्रीयकरण, आरक्षण व्यवस्था को मजबूत करना और दलित बौद्धों को भी आरक्षण का लाभ मिले, ऐसी मांगे इस आंदोलन में थी। 30 जनवरी 1965 तक पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक लगभग 3,60,000 दलित सत्याग्रहियों ने जेल यात्रा की, जो भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इस आंदोलन के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और 5 प्रमुख मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया। दादा साहेब गायकवाड़ केवल दलितों के ही नेता नहीं थे, बल्कि सभी ही भूमिहीन मजदूरों के नेता थे। वे हमेशा टोपी और धोती में रहते थे, जो उनकी पहचान थी। उन्होंने बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया, लेकिन अपनी ग्रामीण वेशभूषा कभी नहीं छोड़ी। उनके बात करने के लहजे में विनोद और शालीनता दोनों होती थी। उन्होंने नासिक जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय के निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे। दादा साहेब ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने दिल्ली में लोकसभा के सामने डॉक्टर अंबेडकर की भव्य प्रतिमा स्थापित करवाई, नागपुर की दीक्षा भूमि के लिए 14 एकड़ जमीन दिलवाई
और वहां भव्य विहार, प्रतिमा, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय शुरू करवाए। दादर के चैत्य भूमि के लिए भी जमीन दिलवाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनकी स्मृति में महाराष्ट्र सरकार कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ सबलीकरण और स्वाभिमान योजना चलाती है। इस योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को विशेष सहायता दी जाती है। सन 2002 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। मुंबई के रावली कैंप में एक नगर निगम आवासीय कॉलोनी का नाम उनके नाम पर रखा गया। 29 दिसंबर 1971 को नई दिल्ली में 69 वर्ष की आयु में दादा साहेब गायकवाड़ का निधन हो गया। उनके जाने से दलित आंदोलन को अपूर्ण क्षति हुई, लेकिन उन्होंने जो भूमि आंदोलन की नींव रखा वह आज भी प्रासंगिक है। आज जिग्नेश मेवानी जैसे नेता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनके कार्य ने यह सिद्ध किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद असली स्वतंत्रता का अर्थ है आर्थिक स्वतंत्रता और जमीन का अधिकार। कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ का जीवन और कार्य आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है और समाज में समानता स्थापित करना चाहता है। मैं दादा साहेब गायकवाड़ को शत शत नमन करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। थैंक यू मनीषा। नेक्स्ट रीजा। Can a man fight an empire without hatred, challenge injustice without violence, and change history using only compassion as his weapon? India's freedom struggle answers that question with only one name. C.F. Andrews lovingly called Deen Bandhu the friend of the poor. Warm greetings and a very good morning to everyone. I am Riza Memon, a first-year student pursuing my bachelor's degree in information technology. Respected dignitaries, honorable teachers, and my fellow learners, the story of India's freedom is not only written in acts of rebellion, but also in acts of love, sacrifice, and moral courage. Charles Freer Andrews, an English Christian priest by birth, chose India not as a colony, but as his cause. Today, power is counted in likes and followers, but C.F. Andrews changed lives without a post, a hashtag, or a weapon. He didn't go viral online. He went viral in human hearts. Gandhiji once said about him, Christ gave us the message, but Andrews showed us how to live it. That single line captures the spirit of Deen Bandhu. Born in England in 1871, C.F. Andrews came to India as a teacher. But what he saw here shook his conscience. He witnessed poverty, racial discrimination, and the cruelty of colonial rule and refused to remain silent. Unlike many British officials, Andrews rejected the idea of racial superiority. He stood firmly with Indians and declared that exploitation in any form was a sin against humanity. C.F. Andrews supported India's demand for self-rule and openly criticized British policies even when it meant facing hostility from his own countrymen. His courage lay in choosing truth over comfort. In him, India found not a foreigner, but a true patriot of the human race. He became a close associate of Mahatma Gandhi and supported India's demand. He became a close associate of Mahatma Gandhi and supported the freedom struggle not with slogans, but with service and truth. He believed that real freedom must be rooted in moral awakening. He once said, "True freedom is not merely political. It is the freedom of the human soul."
One of his greatest contributions was his fight for the rights of indentured Indian laborers in South Africa, Fiji, and the Caribbean. When Indians were treated worse than slaves, Andrews became their voice. He exposed their suffering to the world and forced the British government to confront its own injustice. Because of this tireless service, the oppressed gave him a name greater than any title, Deen Bandhu, the friend of the poor. Andrews also played a vital role in promoting Hindu-Christian unity. At a time when religion was used to divide, he used faith to heal and unite. He believed that love of God must express itself as love for humanity. He reminded the world, religion that does not serve the poor is no religion at all. So today, as we remember the heroes of our freedom struggle, let us ask ourselves, is courage always loud? Or can it be gentle and firm at the same time? C.F. Andrews proved that love can be revolutionary. He was English by birth, Christian by faith, but Indian by choice. And his life teaches us a timeless lesson. When you stand with the poorest and the weakest, you stand on the right side of history. Thank you. Thank you, Riza. Next, Fazila. सुप्रभात, माननीय अतिथि महोदय, प्रिंसिपल, सभी शिक्षक और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पर अपने देश के वीर जवानों के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे देश के प्रति कई देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है और इस देश को आज़ाद करवाया है। यही वजह है कि आज हम सब सुकून से, अपनी मर्जी से और अपने तरीके से अपना जीवन जी पा रहे हैं। उन्हीं वीर जवानों में से एक वीर जवान के बारे में मैं सैयद फजीला गुलाम दस्तगीर तृतीय वर्ष बीकॉम की छात्र अपनी व्यक्तिता स्पष्ट करना चाहूँगी, जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महान क्रांतिकारी और जननायक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन, जमींदारी व्यवस्था और सामाजिक शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि आदिवासी चेतना, सामाजिक सुधार और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में जन्मे बिरसा मुंडा ने बहुत कम आयु में ऐसे प्रभावशाली संघर्ष किए कि आज भी उन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता के रूप में स्मरण किया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण मुंडा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगा मुंडा और माता का नाम कर्मी हातू था। उनका बचपन घने जंगलों, पहाड़ों और प्रकृति के बीच बीता, जहां से उन्हें प्रकृति की और भूमि के प्रति गहरा लगाव मिला। बिरसा मुंडा ने प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी विद्यालय में प्राप्त की। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन और मिशनरी गतिविधियां आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं को, भूमि को अधिकारों से प्रभावित कर रही है। यही अनुभव आगे चलकर उनके विद्रोह का विचार का आधार बना। 19वीं शताब्दी के अंत में छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी समाज अत्यंत शोषण की स्थिति में था। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी व्यवस्था और ठेकेदारी प्रथा ने आदिवासियों की सामूहिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर दिया। आदिवासी अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए। इसके साथ ही महाजन जमींदार और साहूकार आदिवासियों का आर्थिक शोषण करते थे। कर्ज के बदले उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। इस सामाजिक और आर्थिक अन्याय के बिरसा मुंडा ने विद्रोह के लिए प्रेरित हो गए। बिरसा मुंडा केवल राजनीतिक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने
आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और नैतिक पतन का भी विरुद्ध के लिए आवाज उठाई। उन्होंने एक नए धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें स्वयं को ईश्वर का दूत मानते थे। उनका उद्देश्य आदिवासी में आत्मगौरव, एकता और नैतिक शुद्धता का भाव जागृत करना था। उन्होंने शराब, जादू, टोना और बाहरी प्रभावों का विरुद्ध किया। उलगुलान आंदोलन, महाविद्रोह आंदोलन, बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा योगदान उलगुलान आंदोलन रहा है, जिसका अर्थ है महान विद्रोह। यह आंदोलन 1899 से 1900 के बीच चरम पर पहुंचा। इस आंदोलन का उद्देश्य था जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, आदिवासी की भूमि की रक्षा, पारंपरिक आदिवासी स्वशासन की स्थापना। बिरसा मुंडा ने आदिवासी युवाओं को संगठित किया और उन्हें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित भी किया। यह आंदोलन भले ही आधुनिक हथियारों से लैस नहीं था, लेकिन उसमें आत्मबल, साहस और सामूहिक चेतना की अपार शक्ति थी। ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया, उलगुलान आंदोलन के अंग्रेजी शासन बुरी तरह भयभीत हो गए। अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए कठोर कई नीति दमन अपनाई। कई आदिवासी गांव जला दिए गए, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और उन पर निर्दोष अत्याचार किए गए। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा का रांची जेल में निधन हो गया। ब्रिटिश सरकार ने उनकी मृत्यु को कारण बीमारी बताया, लेकिन आदिवासी समाज आज भी इसे एक रहस्यमय और संदेहास्पद मृत्यु मानता है। उनकी अल्पायु में मृत्यु के बावजूद उनका प्रभाव इतना गहरा था कि उनके आंदोलन इतिहास में अमर हो गए। बिरसा मुंडा का संघर्ष केवल एक स्थानीय विद्रोह नहीं था, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता और अधिकारों का राष्ट्रीय आंदोलन था। उनके आंदोलन के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार को आदिवासी भूमि कानूनों पर पूर्ण विचार भी करना पड़ा। बाद में छोटा नागपुर क्षेत्र कष्टकारी अधिनियम जैसे कानून बने, जिन्होंने आदिवासियों की भूमि को कुछ हद तक संरक्षण किया। बिरसा मुंडा के संघर्ष की ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। आज बिरसा मुंडा को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से गिना जाता है। 15 नवंबर को उनकी जयंती भी मनाई जाती है। झारखंड राज्य में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है। कई मिशनरी विद्यालय, हवाई अड्डे और संस्था उनके नाम पर है। वे आदिवासी चेतना और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे वीर योद्धा थे, जिन्हें बिना किसी संसाधन के केवल जनशक्ति और आत्मबल के सहारे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा संघर्ष वही है जो अन्याय के विरुद्ध और समाज के सबसे शोषित वर्ग के लिए लड़ा जाए। बिरसा मुंडा आज भी आदिवासी समाज ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए आत्मसम्मान और न्याय के प्रेरणा स्रोत हैं। तो देखा आप लोगों ने, बिरसा मुंडा जी के दिल में अपने भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेज़ों से कितनी प्रबल भावना थी। आज मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी कि हम पूरे भारत तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन अपने आस पड़ोस में, आजू बाजू में जो भी लोग हैं, उनसे अपना सुख दुख बांटें, उनकी खुशी में, उनके दुख में उनके साथ शामिल हों, मिलजुल कर एक होकर रहें। ऐसी एकता ही आज हमारे देश को आगे ले जा सकती है और इसकी बहुत आवश्यकता है। तो जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है और एक एक कड़ी जोड़कर जंजीर बनती है, वैसे ही कंधे से कंधा लगाकर, हाथ से हाथ मिलाकर और कदम से कदम बढ़ाकर हम चलने की कोशिश जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। मेहरदेव। Meherdeep, you have 3 minutes. When freedom is chained, words are not enough. When injustice become brutal, silence become a crime. In those moments, history is not changed by speeches, it is changed by sacrifices. Today, I speak about one such fearless warrior
Bagh Jatin, the man whose courage rolled louder than the British Empire itself. Respected judges, honorable teachers, and my dear friends. Myself, Meherdeep Singh Bedi from FY BSc IT. Today, I am here to honor an unknown freedom fighter, Bagh Jatin. India's freedom struggle was not only a moment of non-violence, it was a saga of unflinched bravery and armed assist. Among its finest warriors stood Bhagna Jatinnath Mukherjee, also known as Bagh Jatin. He earned the title Bagh, means tiger, not from a battlefield, but from a legend. It is said that he once fought a tiger with a knife and emerged victoriously. That moment just did not define his strength, but symbolized its spirit which he will fought the British later on. Baghdadi believed that freedom was never gifted, it has to be sneezed. Inspired by revolutionary thinkers like Sri Aurobindo and associated with Jagrut movement, Bagh Jatin organized an armed assist against British. His vision was clear: to overthrow the colonial rule through discipline, courage, and sacrifice. He famously believed that even if revolutionaries perished, their sacrifice would awaken the nation. And for him, that was not defeat, it was a call to rise. During the First World War, Bagh Jatin planned a bold uprising to strike British when they were the most vulnerable. Though their resources were limited and the odds were stacking against them, his determination remained unshaken. In 1915, surrounded by British force near the banks of Budabangla River in Orissa, Bagh Jatin fought relentlessly with his commandos. Badly wounded, outnumbered, and yet running out of ammunition, he refused to surrender. His final stand became a legend. Even the British officer who captured him reported acknowledged his bravery. Such was his courage that even the enemy could not define his greatness. Bagh Jatin lived by a revolutionary belief. We Bagh Jatin did. He did not live long to see independent India, but independent India lives because of him. And as long as the courage is remembered, the tiger of India's freedom fighting struggle will never fall silent. Thank you. Vaishnavi. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर पाहुणे, शिक्षकवृंद आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आज मी आपल्यासमोर भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील एक निर्भीड जनतेसाठी झटणारे महान नेते बॅरिस्टर जोसेफ उर्फ काका यांच्याबद्दल मनोगत व्यक्त करणार आहे. बॅपिस्टा बॅरिस्टर जोसेफ उर्फ काका ह्यांचा जन्म 17 मार्च 1864 ते 18 सप्टेंबर 1930 हा त्यांचा कालावधी होता. भारतीय राजनीतितज्ञ व भारतातील होम रूल लीग चळवळीचे नेते. काका बॅपिस्टा यांचे मूळ नाव जोसेफ. त्यांचा जन्म मुंबईतील माझगाव येथील म्हातारपाखाडी येथे एका महाराष्ट्रीय ख्रिश्चन कुटुंबात झाला. त्यांचे आई वडील मूळचे भाईंदरजवळील उत्तम गावचे. बॅपिस्टा हे मुंबईत कॅथलिक समाजाचे पुढाकारी मानले जात. जोसेफ बॅपिस्टांची देशभक्ती, स्वातंत्र्यप्रेम आणि त्यांच्यामधील कामगार वर्गाच्या कल्याणाविषयी असलेली कळकळ यांमुळे त्यांना मॅझिनी ऑफ म्हातारपाखाडी असे म्हटले जाईल. जोसेफ बॅपिस्टा यांचे शालेय शिक्षण मुंबईतील माझगाव येथील सेंट मॅरीज हायस्कूलमध्ये झाले. मॅट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी कॉलेज ऑफ सायन्स या संस्थेत आपले नाव दाखल केले.
तेथूनच त्यांनी 1886 साली LCE ही पदवी मिळवली. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी वनखात्यात अभियंत्याचे कामही मिळवले, परंतु त्यांचे मन रमेना. 1894 साली आपल्या नोकरीचा राजीनामा देऊन ते उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले. तेथे त्यांनी कायदा आणि राज्यशास्त्र या विषयांचा अभ्यास केला व 1899 मध्ये लॉटरी पॉलिस मिळवला. त्याच वर्षी इंग्लंडमध्ये त्यांची आणि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची प्रथम भेट झाली. एका प्रसंगी बॅप्टिस्टा यांनी आयर्लंडमधील होम रूल लीगच्या धर्तीवर भारतामध्ये होम रूल लीग स्थापन करावे असे लोकमान्य टिळकांना सुचवले. त्यावेळी कदाचित अतिघाई कार्य नाशाला कारणीभूत होईल असे टिळकांनी सांगितले. पुन्हा 1906 साली काँग्रेसमध्ये लोकमान्य टिळकांची व बॅप्टिस्टांची भेट झाली. बॅप्टिस्टांनी पुन्हा एकदा भारतीय होम रूल लीगची कल्पना मांडली. तेव्हाही टिळकांनी पुन्हा सबुरीचा सल्ला दिला. लोकमान्य टिळक, शिवरामपंत परांजपे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावरील गाजलेल्या राजद्रोहाच्या खटल्यापासून केवळ ब्रिटिश रोष आपणावर ओढावू नये म्हणून नामवंत वकील दूर राहण्याचा प्रयत्न करीत होते. तेव्हा बॅप्टिस्टांनी धडाडीने आणि निस्वार्थपणे पुढे येऊन वकीलपत्रे स्वीकारली. कायद्याचे सल्लागार म्हणून बॅरिस्टर बॅप्टिस्टा महत्त्व लोकमान्य टिळकांना फार वाटते. 1907 साली लोकमान्य टिळकांवर राजद्रोहाच्या आरोपाखाली दुसरा खटला भरण्यात आला. त्यावेळी बॅरिस्टर बॅप्टिस्टांनी टिळकांचे वकीलपत्र घेतले. बॅरिस्टर बॅप्टिस्टा युक्तिवादानंतर लोकमान्य टिळक निरपराध आहेत तसंच ते ज्यूरमधील भारतीयांना दिले, परंतु त्यांचे मत विचारात न घेता न्यायमूर्ती दावर यांनी टिळकांना 6 वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यांची रवानगी मंडळेच्या तुरुंगात करण्यात आली. सुरत येथील राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात फूट पडल्यावर त्यांनी मुंबई इंग्रजी वर्तमानपत्रातून लेख लिहून हिरारीने टिळकांची बाजू मांडली. लोकमान्य टिळकांनी बॅप्टिस्टांना आपला मानले. अखेरपर्यंत दोघांनी एकमेकांना अंतरही दिले नाही. इसवी सन 1915 साली टिळक यांनी मंडेलाहून परत पुण्यात आल्यावर भरलेल्या राजकीय परिषदेच्या अध्यक्षांवरून बॅरिस्टर बॅप्टिस्टांना होम रूलचा पुनरुच्चार केला. यावेळी मात्र टिळकांनी संमती दिली. 1916 साली बेलगाव परिषदेत होम रूल लीगची स्थापना करण्यात आली. बॅरिस्टर बॅप्टिस्टा यांनाच परिषदेत पहिले अध्यक्ष व केळकरांना सचिव म्हणून निवडले गेले. बॅप्टिस्टा हे 1916 ते 1926 पर्यंत होम रूल लीगचे अध्यक्ष होते. ज्यांनी स्वतःसाठी नाही तर देशासाठी जगणं निवडले असे बॅरिस्टर जोसेफ उर्फ काका बाप्तिसा आजही आपल्या विचारातून जिवंत आहेत. त्यांना शतशः नमन करून मी माझे भाषण संपवते. धन्यवाद. Today's last speech, Savio. Can the fight for freedom be not only waged in the streets, but also in clinics, classrooms, and consciousness? India's freedom struggle was answered with the life of Hakim Ajmal Khan, a physician who healed bodies and awakened a nation. Respected judges, honorable teachers, and my dear friends, my name is Savio, and I am here to present the life of Hakim Ajmal Khan. When we think of freedom fighters, we often think of fiery speeches or armed resilience. But in India's independence, it was also led by men who believed to serve humanity, was to serve our nation. Hakim Ajmal Khan was one of a renowned physician, educationalist, and a nationalist. Born in 1868 into the family of celebrated Unani physician, Hakim Ajmal Khan earned respect not just for his medical brilliance, but his deep commitment to India's freedom. He believed that political independence was meaningless unless the people were healthy, educated, and united. Hakim Ajmal Khan was an active leader of Indian National Congress, and he presided over the session of 1921. He firmly stood with Mahatma Gandhi during the non-cooperation movement, even when it meant to sacrifice his professional comfort and face British repression. He believed he believed in the spirit that true healing begins when the fear ends, and the fear was the greatest
disease inflicted by the British. Hakim Ajmal Khan was a strong advocate for Hindu-Muslim unity. At the time of rising communal tension, he worked alongside with leaders like Maulana Abdul Kalam Azad to promote national harmony. He warned that division will only strengthen the oppressor. One of his lasting contributions was in the field of education. He was a founding figure of Jamia Millia Islamia, an institution born during the non-cooperation movement as a symbol of resistance against the colonial education policies. He believed education rooted in Indian values was essential for true freedom. Hakim Ajmal Khan showed India that resistance did not always roar, it sometimes healed, taught, and united. So, as we enjoy the fruits of freedom, let us ask ourselves, are we only the beneficiaries of freedom or also the caretakers of national well being? Hakim Ajmal Khan reminds us that freedom is strongest when the people serve. Thank you. After these speeches, I request Principal Dr. Somnath Vibhude to share his thoughts. Yeah, thank you all for patient listening. Just 2 more minutes. Before the formal vote of thanks, I request our chairman, sir, to appreciate the hard work of our 3 editors, Dr. Anil Sonavne, Dr. Ramdas Tonde, and Dr. Chaitanya Veer. Further, you can join. We are giving them flowers as appreciation of their hard work which they have put for this elocution series. We have 2 Anils, 2 Dr. Anils. स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की आखिरी कड़ी के रूप में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं हिंदी विभाग प्रमुख रामदास तोंडे यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज के हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय आर्च बिशप थॉमस डिसूजा जी आज यहाँ अपनी गरिमामय उपस्थिति उन्होंने यहाँ पर दर्शाई और साथ ही अपने विचारों से हमें प्रेरित किया। आदरणीय बिशप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं महाविद्यालय की ओर से, हम सभी की ओर से। आप यहाँ है, अपनी अत्यंत व्यस्तता में समय निकाल कर आप यहाँ पर आए और हम सभी को प्रेरित किया। आपका मन की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार हम धन्यवाद अदा करेंगे। साथ ही हमारे महाविद्यालय के प्रशासक डॉक्टर अनिल परिराज जी, जिन्होंने ये जो स्वतंत्रता सेनानियों पर जो भी ये बुकलेट आप देख रहे हैं उसको बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और हमारा मार्गदर्शन भी किया। तो प्रशासक अनिल परिराज जी के लिए भी जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ विभूति सर, जिन्होंने ये पूरा उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं उस साकार रूप, तो उसके लिए जोरदार तालियां करते हैं प्राचार्य महोदय। साथ ही आदरणीय फादर राजेश लोपी जी जो वहाँ पर पीछे बैठे हैं दर्शक दीर्घा में। फादर राजेश जी, आपकी संकल्पना को साकार करने में हमने थोड़ी मेहनत की है। मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। आपके लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां राजीव जी के लिए। और आज के कार्यक्रम का बेहतरीन सूत्र संचालन जो है हमारे मित्र डॉक्टर अनिल सोनोने सर ने किया है, इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संपादक मंडल के सभी सदस्य, डॉक्टर चैतन्य वीर, डॉक्टर दिनेश काळे, डॉक्टर अनिल, मैं स्वयं, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके वसई जो क्षेत्र है वहाँ से अलग अलग विद्यालयों के, महाविद्यालयों के प्रोफेसर और विद्यार्थी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज के प्रोफेसर और विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, कृपया जरा एक बार खड़े रहेंगे, इनके लिए जोरदार तालियां। प्रोफेसर का नाम सुमित जी, साथ ही टीबी कॉलेज के भी प्रोफेसर और विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्लीज आप थोड़ा खड़े रहिए, जोरदार तालियां इनके लिए। स्टूडेंट हैं टीबी कॉलेज के, खड़े रहिए जरा प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपका नाम? मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही न्यू इंग्लिश स्कूल के भी विद्यार्थी और प्रोफेसर यहाँ उपस्थित हैं। न्यू इंग्लिश स्कूल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अन्य कोई कॉलेज के विद्यार्थी है यहाँ पर? मेरे पास ये 3 ही कॉलेज के नाम है, और कोई है यहाँ पर? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अदा करना चाहूँगा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सहभागी हैं, जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से ये तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले भी यहाँ पर एक बार 26 जनवरी को भी ये प्रस्तुति हुई थी, और आज बहुत मेहनत आप लोगों ने ली है। आपके लिए, इनके लिए जोरदार तालियां मुझे लगता है होनी चाहिए सभी। और कुछ स्टूडेंट थे जो पहली बार यहाँ पर बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इनकी ये कोशिश बहुत महत्वपूर्ण है। एक कवि ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, किस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी से मगर लहरों से टकराती तो है। ये बहुत कोशिश, आपके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मुझे लगता है कि इसी तरह से आप अपने आप को इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे जहाँ पर अवसर आपको मिलेगा। हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर भी यहाँ उपस्थित है, या विद्यार्थी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। साथ ही एलिसन और टीम जो कि यहाँ पर फोटोग्राफी और पूरा लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के लिए जिनका सहयोग मिला है, उन सभी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और हमेशा हरीश सावंत जी जो है यहाँ पर ये पूरा टेक्निकल सेशन पूरा संभालते हैं, उनका भी योगदान रहता है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। एक शेर के साथ मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करना चाहूँगा। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होगा। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नाम अगर छूट गया है तो उनके लिए भी धन्यवाद। और ये कार्यक्रम अभी औपचारिक जो कार्यक्रम है हमारा यहाँ पर प्राचार्य महोदय की अनुमति से ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है, ऐसी घोषणा करता हूँ। और साथ ही बाजू के क्लासरूम में टी और स्नैक्स की व्यवस्था की गई है, कृपया वहाँ पर उसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।